about the XAT exam. And those of you watching this as a video later, you can skip ahead to 1.5, 2 minutes maybe of the video, because it takes a little bit of time for people to discover the live and come into the session. So I keep waiting for people to come in and do this. And Merry Christmas to all of you. I mean, of course, Christmas is over, and let's hope you have a great 2023. My best wishes for all of you. And that, I mean, when you look back on your life later, as you grow, and even at your age currently, if you're 20, 22, 25, and you're looking back at your life, there'll be some significant years which you say that yes, that was a good year for me. So you need to make sure that 2023 is like that. So 10 years from today, by 2030, hi Abhijit, hi everybody else who's joining in. So 10 years from today, 15 years from today, when you look back at 2023, you should think positively about yourself. Shubham asked me for a trip of my house. I'll do that. Yeah, it's a good house. I've got it's kind of a villa, so I can show you around. So this is my drawing room, and that's my garden in front. As you can see, I don't know whether you can see my cars parked outside, but I think it's slightly dark there. And I mean, this is the ground floor. कभी मैं अपने office भी ले जाऊँगा तुम लोग को. This is the entrance lobby here, and those are my tennis rackets down there. And so that's my entrance lobby. And as you keep going inside, this is Meenakshi ma'am's puja room. She's very very religious and has a puja every day. And so this is going down the lounge area, and see evidence of the tennis balls that we have, all the tennis that we do. So you can see that down there. How do I show that to you? Yeah, you can see all the tennis balls. These are all tennis balls here. These are all tennis balls that you can see. And okay, so this is the lounge area, and then there's a garden there, and then there's a couple of floors upstairs, but that's something which I'll show you later. So today we are looking at XAT 2023, and what should we do, and how should we prepare for XAT in 2023. So I live in Noida, and it's pretty cold. Maybe I'll just do this from outside, from my garden. So XAT 2023, what are the key inputs, key things that you want to remember for preparing for the XAT? And so there are 4-5 key strategy points that you need to remember, that you need to make sure you remember. The first, so let me now focus on the exam, on XAT, and tell you, those of you going for XAT this year, of course, for them this will be valuable. But those of you going for XAT even next year, and I think I need to invest in a selfie stick so that I can do this more easily, because my hand starts paining after some time. But chalo, let's focus. First things first, XAT mein it's a 2.2 minute per question exam. So it's a 2.2 minute per exam. Great to hear that, Shubham. So it's a 2.2 minute per question exam, which is different from the CAT in the sense that CAT, you have 66 questions in 120 minutes. So CAT is a 1.8 minutes per question exam, and XAT is a 2.2 minutes per question exam in that context. So you get a little bit more time per question, and it's not such a rush. And the question quality is and the difficulty level of the questions would be pretty similar. So essentially, the first message about XAT is that it's a slightly slower exam, more time. You got 165 minutes to do 75 questions, and so you get a little bit more time per question. You get more time to analyze the questions, etc.
और questions आज नहीं ले रहा हूँ मैं कनिष्का, so keep the questions this thing. I'll take the questions in the next ask me anything that I have. And of course, as always, you can put in your questions at the on the video towards the end. Questions डाल दो video पे, and video के chat पे, not the chat, not the live chat, but on the video कमेंट्स पे क्वेश्चन डाल देना. I'll answer all your questions जो भी है. So XAT में the target is to score around 35 marks. You need to be able to score around 35 marks. 35 30 से 30 प्लस पे अच्छा परसेंटाइल स्टार्ट हो जाता है. 35 पे you start getting great percentiles. 40 plus you, so 45 and all kind of you are amongst the top 100 people in the country. So that's what it is. Now XAT has a very simple strategy. You need to clear the cutoffs in every section, right? So you need to clear the cutoffs in every section. Try to score a 35 plus. Focus on 35 plus. Of course, if your skills are not that good, then you try to get as close to 30 as possible. But अगर XLRA के लिए सीरियस हो तो 8 marks तो तुमको लाना पड़ेगा तीनों सेक्शन में. There are 3 sections, quants and DI is together. That's also an important part of the strategy. 28 questions you can expect in quants plus DI. IS or IM, here question. My dad would love to answer this question or to when he hears this question. But anyway, I'll come back to that later. या वीडियो के कमेंट्स पे डाल दो क्वेश्चन 1. सो मैं जब वीडियो के कमेंट्स देखूंगा तो मैं सब आंसर कर दूंगा तुम लोग का. हैव दे इंक्रीज्ड टाइम ड्यूरेशन? 165 मिनट्स है ना 75 क्वेश्चंस के लिए, जिसको वो लोग वर्बल एंड रीजनिंग बोलते हैं. ऑल दो उसमें रीजनिंग नहीं होता है. और दूसरा सेक्शन है तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, एंड थर्ड section of course is Q and DI. So the basic strategy is get to 8 marks on each one. ठीक है, time duration increase हो गया तो that's good. You get more time per question further. 2 to 5:30. नहीं, I think there's an essay this thing also ना, तो इसलिए 2 to 5:30 है वो. 165 मिनट्स का पेपर होगा, फिर 15 मिनट्स का GK होगा शायद, और देन 30 मिनट्स का वो होगा. इट्स नॉट, आई डोंट थिंक दे हैव इंक्रीज्ड टाइम अदरवाइज. सो 30 मिनट्स का ऐसे होगा. यस, सो विल टॉक अबाउट द ऐसे लेटर. लेट्स फोकस ऑन द, आई एम टॉकिंग टुडे ऑन द 165 मिनट्स पार्ट. सो द second significant part about that is that there's no sectional. So the 165 minutes that you have, you can solve all 3 sections in 165 minutes. You can give as much time. You want to give 100 minutes on English, you're going to be allowed to do that. But obviously you don't do it, right? So how do you divide the time is the big question. So the simple rule for division of time is that since it's 2.2 minutes per question on the paper, 75 questions, 165 minutes, you multiply the number of questions by 2.2. ठीक है? So जैसे 26 questions अगर verbal में है तो 57.2 minutes देना उसमें. 28 questions अगर quants में है तो 61.6 minutes देना. 28 into 2.2. और 21 questions DM में है तो 46.2 minutes देना. 21 into 4 into 2.2, whatever it is. How much will that be? Yeah, 46.2 minutes देना, right? And that's the mean time that you get, and then you can modulate it by plus minus 5. So अगर तुमको वर्बल में स्कोरिंग अच्छा होता है तो 57 मिनट्स के बदले 62 मिनट्स दे सकते हो, लेकिन वो 5 मिनट फिर कहाँ से निकालोगे जहाँ पे तुम्हारा स्कोरिंग उतना अच्छा नहीं है, राइट? But of course, when you reduce the time on a section, you will have to increase you'll have to ensure that you clear the cutoffs there. ठीक है, in the section which you are reducing time. So suppose you think that you score better in verbal than in quants, so then what you do is you reduce your time in quants by 5 minutes from 61 to 56, and take your verbal time from 57 to 62. So that 5 minutes you have to make it count for at least 2-3 marks. But at the same time you have to make sure that in the 56 minutes in quants you get at least 8-9. ऐसा नहीं होना चाहिए कि
तुम्हारा सेक्शनल कट ऑफ में दिक्कत हो जाए बिकॉज यू हैव रिड्यूस द टाइम. सो टाइम उतना ही रिड्यूस करो जितना सेक्शनल कट ऑफ में क्वेश्चन नहीं आएगा. और अगर तुमको लगता है कि 50 मिनट्स में भी तुम कॉन्ट्स, अगर तुम्हारा वोबल स्ट्रांग है, तो अगर तुमको लगता है कि 50 मिनट्स में भी कॉन्ट्स में तुम्हारा 10 मिनट कम करने से फ्रॉम द 2.2 मिनट्स पर क्वेश्चन लॉजिक, यू कैन फाइंड मे बी what you can do is one section you keep constant at 2.2 minutes per question, and the third section you reduce. The third strategy possible is that you increase the time in two sections, and you reduce the time in one section where your scoring rate is lower. But provided you are clearing the cutoff in that section where you're taking time. So one strategy could be get strong at DM. Do your verbal strong. If your verbal is strong, you can. I mean, both people, whether your cons is strong, your verbal is strong, you can actually become strong at DM. DM strength करना बहुत बड़ा issue नहीं है. So maybe I'll load a couple of classes I've taken for my Mindworkzz students on the channel, so that you can have a look at how to think in DM questions. और typically DM questions में क्या होता है, 21 questions अगर होंगे तो 17-18 में अगर सही सोचोगे तो एक क्लियर आंसर मिलेगा. 2-3 क्वेश्चन में तुमको उतना क्लियर आंसर नहीं मिलेगा बिकॉज 2 आंसर बहुत क्लोज रहेंगे एक्सेट्रा. बट 17-18 क्वेश्चन में तुमको एक क्लियर आंसर मिल जाएगा. सो कमिंग बैक टू द इक्वेशन इज 888 टू क्लियर द कट ऑफ. कट ऑफ कभी कभी 6-6.5 पे भी रहता है, बट टू बी सेफ यू डोंट वांट टू बी टू क्लोज टू द कट ऑफ. सो टू बी सेफ टेक इट टू 888 ऑन ईच सेक्शन. तो 24 मार्क्स हो गए. अब डेल्टा तुमको क्रिएट करना है 10 मार्क का, 10 से 15 मार्क का. सो यू वांट टू गेट टू 35, यू वांट टू गेट टू 38 स्कोर वाइज, है ना. सो 25 से 35 प्लस 10 मार्क्स का डेल्टा कहाँ से क्रिएट करोगे वो प्लान करना है. सो टिपिकली आउट ऑफ दिस 10 मार्क्स डेल्टा 888, जैसे DM का सेक्शन है, वहाँ पे तुम्हारा स्ट्रैटेजी आराम से हो सकता है कि 17-18 अगर क्लियर आंसर्स आने वाले हैं, तो अगर तुम 12-13 भी क्लियर आंसर्स खोज लो और लेट्स से 3-4 क्वेश्चन में तुमको 2 आंसर दिख रहे हैं, उसमें से तुमने चार मार्क की 2 राइट आए और 2 रॉन्ग आए, तो तुमको 14-15 आ सकता है DM में. यू कैन ईजिली गेट अ +6, +5, +6 यू कैन ईजिली plan for from the 24. So 888 and the delta of +5 comes from DM. The other delta you try to get it either from your cons or your verbal section. So this is the second point. Third point is the cons is not just cons, it's cons plus DI. So those of you who are weak at cons, you can actually plan the DI sets. There'll be 2 sets of DI which will be around 6 to 8 questions. So you can actually plan to get 8 marks there in data interpretation. So that will create मतलब अगर तुम दोनों सेट सॉल्व कर लेते हो DI का 10-10 मिनट में भी करते हो सपोज, और ZAT का DI is not like the CAT DI. ZAT DI is much simpler in terms of its content, and it's normally traditional. थोड़ा logical होता है. You have each question is 1 mark and minus 0.25 marks. So and 5 options. That's another point that you need to remember. So that has a little bit of the DI is actually a pressure release for those of you who are weak at quants. So what you can do is if there are 8 questions and 2 sets, those 2 set रहते हैं normally, unless they change this the pattern drastically. It's going to be 2 sets 8 questions. कभी 2 sets 6 questions होता है. So if you plan to solve both those sets, let's say in 10 minutes each, so 20 minutes में finish those 2 sets, and if you do that, and you can meet my, there's a cat here who comes and visits our house every day, so you can see it. Come, you can see it's here. Anyway, so coming back to what I was saying. So what you need to do is so in quants DI section, if you practice your DI, especially traditional DI, and past years that paper ज़रूर देख लेना, तो वो क्या करेगा कि तुम्हारा 8 क्वेश्चन तुम आराम से 2 सेट्स, अगर DI स्किल्स एवरेज भी है, एवरेज प्लस भी है, तो you can I mean you don't need great DI. जैसे CAT में क्या है कि if you have to be great in DI and LR to be able to solve all 4 sets, right? So the cat will be preparing for that, I guess. So anyway, coming back to 20 मिनट में निकाल लो बाकी 20 क्वेश्चन में से, even if you do 1 in 4 questions, and 1 in 4 questions 4 क्वेश्चन कि 4 में से 1 क्वेश्चन आता है,
तो यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सपेक्ट कि 5 क्वेश्चंस तुमको आएगा दैट में. अगर कैट में तुम्हारा 1 in 2 क्वेश्चन आता था तुमको, तो तुमको 10 क्वेश्चन करीब आएगा दैट में. यू नो 10 क्वेश्चंस. सो यू कैन देन प्लान अकॉर्डिंग टू दैट कि अगर तुम 1 in 2 वाले लेवल पे हो कि यू कैन सॉल्व वन इन टू क्वेश्चंस, तो देन 20 में से 10 क्वेश्चंस तुमको आराम से आएंगे. 10 अगर आते हैं तो 7-8 तो खुद ही लोगे जो तुम कर लोगे. एंड 8 क्वेश्चन तुम अगर DILR के कर लेते हो. And obviously you can understand somebody who does 1 in 2 questions is not very highly skilled, right? So highly skilled कौन है जो 5 में से 4 in quants and you build that ability in quants for your cat. तो तो खुश होगे उसमें से 2-3 हो सकता है नहीं मिलेगा तुमको under pressure. So you'll know 12-13 of them, right? So know 12-13 quants question, know 7-8 DI questions, तो आराम से 20+ स्कोर कर सकते, राइट? सो करने के लिए अगर तुम्हारा क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो जस्ट वर्क ऑन स्पीड लिटिल बिट सो दैट यू कैन डेवलप. थर्ड पॉइंट वो बताइए. मैंने डीएम का बता दिया. डीएम में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे. एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग आएगा विच इज़ मोर अबाउट सिचुएशनल हैंडलिंग, एंड कभी कभी थोड़ा सा क्वान्टिटेटिव आ जाता है, मोर DI. वो कभी कभी आता है, लास्ट 2-3 साल से कम हो गया वो आना. तो वो वाले क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं. तो अगर वैसा कुछ आएगा तो यू कैन अवॉइड इट ऑल्सो. देख लेना, मतलब यू जस्ट दिस थिंग पास्ट ईयर्स दैट पेपर सॉल्व करोगे तो दिख जाएगा तुमको उस तरह के सेट भी. तो उस तरह 2 मिनट का रीडिंग है और 3 क्वेश्चन अगर हैं तो 1-1.5 मिनट पर क्वेश्चन. 6 मिनट्स मेडिकल फॉर योर XAT is that I guess you all of you know there is an element of difference in the XAT, that for every unattempted question of 10 unattempted questions तुमने जो भी सॉल्व किया है +1 -0.25 एक स्कोर आ रहा होगा, और तुमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए 75 में से, तो -0.2 मार्क्स आ जाएगा तुमको उसमें से. और अगर तुमको 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तुमने, तो 12 क्वेश्चन का -0.1 ईच मीन्स -1.2 मार्क्स हो जाएगा फ्रॉम द नेट स्कोर योर वर्ल्ड. अनलाइक कैट जहाँ पे जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन था उसके लिए देयर वाज नो पेनल्टी. So that brings in a significant change in your strategy to take the paper. And the significant change is that if you are between 2 options, whether it's verbal or DM, quants में तो ठीक है, you will be solving the questions, so ऐसा कोई guessing नहीं होता है. But DM और verbal में अगर 2 ऑप्शन के बीच में हो तो उसको मार्क कर देना, because what is happening is we'll assume that तुमसे 8 क्वेश्चन तो छूट ही जाएंगे, कुछ भी करो 7-8 क्वेश्चन तो छूट ही जाएंगे तुम्हारे. तो व्हेन यू हैव अ चॉइस कि ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, इसमें जो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो यू गेटिंग -0.1 फॉर दैट. उसको सॉल्व कर दोगे, गलत हो गया तो -0.25 आएगा. सो यू लूजिंग, योर नेगेटिव इज फ्रॉम -1 to -0.25, ओनली 0.15. And if you get a plus, if you get it right, you get from -0.1 score. If you don't mark it, you're getting -0.1. If you mark it wrong, you're getting -0.25. If you're getting it right, you're getting +1. So the positive differential is 1.1 marks. Negative differential is only 0.5. To get to the right answer. So that way, some connections area. सो तुमको 6 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो जिसमें तुमको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, सब मार्क कर दो. तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड होगा कि 3 राइट आएगा, 3 रॉन्ग आएगा. ऑन अ बैड डे यू माइट गेट ओनली 1 राइट एंड 5 रॉन्ग. सो दैट विल ऑल्सो नॉट बी अ नेगेटिव, बिकॉज यू विल गेट अ नेट पॉजिटिव डिफरेंशियल on what you would have got if you had not marked those. So what you do is the strategy for verbal and the DM section is 10 to 12 clear answers. Okay, I know that this is the answer with 95% accuracy. And 5-6 questions with 50% hit rate, where you know it's one of these 2 answers. Mark those. तुम्हारा automatically delta का major part create हो जाएगा. So that's it. I think I hope do make sure that you solve all the last 8 to 10 years का paper. It will be important. Essay writing के लिए I'll do a separate session. Maybe I'll invite Meenakshi ma'am on the session and she'll also talk about it. DM के लिए DM के लिए mock papers और mock questions देखने में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. वॉट यू हैव टू फोकस ऑन इज़ रीडिंग द न्यूज़ लेटेस्ट, बिकॉज वो क्या करते हैं ना, लेटेस्ट जो न्यूज़ हो रहा है उसी के आसपास कुछ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन बनाते हैं बहुत बार. एक तो वो करो, और दूसरा पुराने XAT के क्वेश्चन 100-200 क्वेश्चन अगर कर लोगे DM के,
तो तुमको समझ में आ जाएगा करना क्या है. और as I said, as a special, I put that on the channel tomorrow, so that you can learn from that, and that'll help you crack this exam. Chalo, thank you so much. I'll wind up, and I'll see you tomorrow. I have a travel. Maybe I'll just come in live from my car back for 5 minutes, or I may skip tomorrow. देखते हैं. I'll inform you on the post. Do follow the channel. Do like, subscribe, and do spread the word. IFT रिजल्ट का मेरे को कोई आइडिया नहीं है. आई एम नॉट फॉलोइंग इट मच. आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट 3-4 डेज में आ जाना चाहिए. नॉट, आई डोंट थिंक इट टेक टू मच टाइम. आजकल डिजिटल एग्ज़ाम्स के कारण बहुत टाइम नहीं लगता है.